So very good evening class. Today is the class of MCQ class number 31 of the UGC-NET paper 2 Mass Communication and Journalism. Here we will discuss some of the important questions which has recently asked in the previous year's questions, right? So that was asked in the 2020 questions that merge cycle examinations of the NT-UGC-NET, right? So here are the questions of the 246. Which among the following methods or the models is used to make the decisions related to the ethical dilemmas in the media? Very important. इनमें से कौन सा method or models है which used to make the decisions related to the ethical dilemmas in the media? Options are fog index, B, Fleiss method, C, Freytag pyramid, Potter box. Everybody answer it. जल्दी से आंसर करेंगे. Very important questions that used to make decisions related to the ethical dilemmas in the media. जल्दी से आंसर करेंगे. Everybody, timer is going to end. Yes, very good. That's the right answer. D जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, चलिए. तो ध्यान देंगे यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन चारों ऑप्शंस को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. सो दिस इज व्हाट हियर इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉटर बॉक्स. क्या होता है पॉटर बॉक्स? जनरली आपका इस तरीके का एक तरह आप बोलें कि दैट इज कॉमनली यूज्ड बाय द ethics scholars or the communication ethics scholars, right? So basically this Potter box has been derived or developed by the Ralph B. Potter, right? The emeritus professor of the social ethics at Harvard University has devised a 4-step processor for the making ethical judgments that is called simply the Potter box. ठीक है, एक ethical dilemmas में, right? Ethical dilemmas के क्या जजमेंट है, किस सिचुएशंस को फेस करता है, how you face the situations or the dilemmas, that is ethical dilemmas, that is the Potter box method. It is used, right? Generally it is used by the communication scholars. So the Potter box method requires us that first 4 processes है, 4-step processes that you have to know, right? So they can ask you the questions like what are the 4-step processes of the 4-step processor of the Ralph B. Potter or the Potter box. तो 4 पॉटर बॉक्स अगर आपसे पूछा गया है तो पॉटर बॉक्स का 4 स्टेप्स भी पूछा जा सकता है. 4 steps processor. What are the 4 steps processor of the Potter box that they can ask which used to make the decisions related to the ethical dilemmas in the media? So they can ask related to this also. So what are the 4 processors? जल्दी से बताएंगे. Explanation में already लिखा हुआ है, right? So first it is definition. पहला क्या है? Definition. It is very much important to learn. First it is definition. 4-step processor of the Potter box that are, first it is definition. Note it down. The second, yes, the second that is values. Very good. बहुत ही सुंदर. Second that is values. Third, everybody just find it. Principles. Very good. थर्ड जो है आपका क्या है? प्रिंसिपल्स है. फोर्थ, एवरीबॉडी, दैट इज लॉयल्टीज, राइट? लॉयल्टीज. ये आपका 4 चीजें हैं 4-step processor of the Potter box that you have to remember. That Potter box developed by the Ralph B. Potter, right? Ralph B. Potter ने इस Potter box को डेवलप किया जो कि एक मीडिया के अंदर एथिकल डायलेमास से संबंधित एक डिसीजंस के लिए यूज किया जाता है, राइट? सो जनरली जर्नलिज्म फील्ड में, मीडिया में या रिसर्च के लिए ये हमें एथिकल पर्पस से यूज करने में मदद करता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट दैट हियर इट इज गिवन with the examples that you can read it very carefully. So Potter box method requires us to precisely define the situation or the dilemma, right? That it defines the situations, right? Than to think about underlying the values of the each case. हर केस की values को समझना. The principles which are most important to apply. Next, the third important thing it is to important, that is principle, that is you apply. Okay,
The fourth that is important, it is here the loyalties, the conflicting loyalties that one might hold to the various stakeholders in this case, right? So this is what the Potter box it is. The Potter box delivers a framework for staying on the right path, keeping decision ethical, and engaging the people in the more productive way. Okay, this is what about the Potter box, that it delivers a framework for the staying on the right path, right? It keeps decision ethical. So this is what about the Potter box that you have to remember, right? It makes the decision related to the ethical dilemmas in the media. Never it forget. चलिए दूसरा चीज ये फॉग इंडेक्स क्या होता है एवरीबॉडी? फॉग इंडेक्स, व्हाट इज फॉग इंडेक्स हियर? यस, वेरी गुड, दैट इज रीडेबिलिटी टेस्ट. ये क्या है आपका? रीडेबिलिटी टेस्ट है. ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट. और व्हाट इज इट अबाउट द फ्लैश मेथड एवरीबॉडी? व्हाट इज फ्लैश मेथड हियर? इट इज आल्सो अबाउट द रीडेबिलिटी टेस्ट, राइट? सेम. It is also the readability test. Readability test is basically that what a text it is difficult to read or hard, right? Yes, whether the text or the text of the pages are difficult or easy, right? Easy hai, medium hai, difficult hai, right? What the levels of the readability it is, that what the ideal score. Like for an example here, the ideal score for the readability with the fog index is 7 or 8. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, राइट, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू अबाउट द रीडेबिलिटी इंडेक्स और द आइडियल स्कोर फॉर द रीडेबिलिटी, दैट व्हाट यू विल से एवरीबॉडी? कितना होता है रीडेबिलिटी का आइडियल स्कोर एवरीबॉडी? व्हाट द आइडियल स्कोर फॉर द रीडेबिलिटी इट इज फॉर द फॉग इंडेक्स एवरीबॉडी? फॉग इंडेक्स के साथ रीडेबिलिटी कितना होता है? 7 to 8 होता है, राइट? सो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है एंड ऑप्शंस दे कैन गिव यू, राइट? 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 10 to 12, राइट? सो अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट? इफ व्हाट विल बी द रीडिंग स्कोर, राइट? व्हाट विल बी द रीडिंग स्कोर which will be too hard for most people to read with the fog index everybody? With yes, that is the 12. okay, very much important. अगर आपका रीडिंग स्कोर, इफ इट इज रीडिंग स्कोर इज 12, इट इज अंडरस्टैंड दैट कि इट इज वेरी मच टू हार्ड फॉर द मोस्ट पीपल टू रीड, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट द फॉग इंडेक्स, दैट वी हैव read the readability score like the 7 to 8 or the 12. So next it is about the Freytag pyramid. Freytag pyramid क्या होता है everybody? This is what here the explanation it is highlighted. Freytag pyramid describes the 5 key stages of a story. एक स्टोरी का 5 स्टेज होता है, राइट? एक स्टोरी का 5 स्टेज होता है, that offering a conceptual framework for the writing a story from the start to finish. So they can ask you the meaning of the questions related to the Freytag pyramid. Freytag pyramid is generally what type of framework it is, right? So that is conceptual framework for the writing a story that you have to know. This is used for the writing a story, right? स्टोरी लिखने के लिए 5 स्टेजेस की जरूरत होती है फ्रीटैग पिरामिड के अनुसार, राइट? सो 5 स्टेज वो क्या क्या है? व्हाट आर द 5 स्टेजेस हियर? दैट आई एम राइटिंग इट हियर एंड इट इज आल्सो हाइलाइटेड. प्लीज नोट इट डाउन अबाउट द 5 स्टेजेस ऑफ द फ्रीटैग पिरामिड. ओके, राइट डाउन फास्ट. 5 स्टेजेस ऑफ द फ्रीटैग पिरामिड that used to write a story from start to finish. The first it is, write it with me, expositions, right? Second, that is left middle rising action. Left middle rising action. The third, climax. Okay. And the fourth, that is right middle falling action. Okay. It is very easy to remember. Okay. And the last, that is right lowest resolutions. This is what the 5 stages of the writing a story from start to finish according to the Freytag pyramid. Okay, very important, very important. Okay, so they can give you the option to identify the stages of the Freytag pyramid. So आपको 5 stages आपको याद होना चाहिए और sequence में याद होना चाहिए, right? So they can also ask you in the pattern of the chronological sequence.
सो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में भी है ये। फर्स्ट दैट इज एक्सपोजिशन, सेकंड दैट इज लेफ्ट मिडिल राइजिंग एक्शन, एंड थर्ड हाईएस्ट क्लाइमेक्स, एंड फोर्थ राइट मिडिल फॉलिंग एक्शन, एंड फिफ्थ राइट लोएस्ट रेजोल्यूशन। दिस इज जस्ट अपोजिट, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट इट इज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 247, which among the following journalist is associated with the developmental news portal PARI, People's Archive of Rural India? आप लोगों ने अगर पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया का पोर्टल अगर आपने देखा होगा, डेफिनेटली सो यू कैन रिलेट इट विद द नेम द फाउंडर। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत ही सुंदर। सो ऑप्शंस आर कल्पना शर्मा, गेल ओमवेट, रवीश कुमार, पी साईनाथ। एवरीबॉडी, पी साईनाथ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट, इन चारों में से कौन जर्नलिस्ट है who is associated with the developmental news portal that is PARI, People's Archive of Rural India? Very good. So that is the D. Very good. D जो है आपका राइट आंसर है। ओके, ध्यान दीजिए। द पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया दैट इज ऑल्सो नोन एज परी, ठीक है, जिसका एक्रोनोम है पीपल्स आर्काइव ऑफ इंडिया। ओके, विच इज अ मल्टीमीडिया डिजिटल जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म इन द इंडिया। इट वाज फाउंडेड इन द December 2014 बाय द वेटरन जर्नलिस्ट P. Sainath, former rural affairs editor of the Hindu. So questions, match of the following के लिए important questions, right? So match the following के लिए important questions. Which of the following journalist associated with NDTV? जल्दी से बताएंगे। C. रवीश कुमार, very good, very important. चलिए next. Which of the following journalist associated with the Hindu? P. Sainath, right? सभी लोग आंसर कीजिए। एवरीबॉडी, द हिंदू न्यूज़पेपर, who journalist is associated with the Hindu? ये भी, और कल्पना शर्मा is also associated with the Hindu, right? We'll explain you about the Kalpana Sharma also very soon. Okay, so this is what that जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न से भी इक्वेशंस इस तरीके से पूछा जा सकता है, राइट? क्वेश्चन कहीं आउट ऑफ द बॉक्स से नहीं आता, आपके ऑप्शन से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट एंड प्लीज आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, और क्वेश्चंस बनाना है, खुद से क्वेश्चन बनाइए, सेल्फ मेड क्वेश्चंस बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए। So this is what about the multimedia digital journalism platform in the India, which is PARI, People's Archive of the Rural India, which founder is P. Sainath. Okay, and this was founded in the year 2014, December 2014, right? So it by the veteran journalist P. Sainath, Rural Affairs of the Hindu, the author of the landmark book that is Everybody Loves a Good Dot. ठीक है, ये भी important है, प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपसे पी साईनाथ का पोर्टल के बारे में पूछा जा सकता है और पी साईनाथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इनकी बुक भी आपसे पूछी जा सकती है, राइट? यस, विल टेल यू वर्निका अबाउट द गेल ऑमलेट आल्सो, सो डोंट वरी। सो एवरीबॉडी लव्स अ गुड डॉट, ठीक है? सो दिस इज व्हाट द बुक, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन बाय रिटन बाय द पी साईनाथ। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। And winner of the 50 national and international awards. So PARI focus on rural journalism, which mainstream media or the dominant news media usually ignore or give little space, right? So that's what this news portal works on, the totally on the rural journalism, where the mainstream media do not reach. Okay, चलिए, so इसके आगे हम बात करते हैं कल्पना शर्मा और गेल ओमदेव के बारे में। तो यहां पर देखिए कल्पना शर्मा के बारे में, ठीक है? कल्पना शर्मा इज कॉलमनिस्ट एंड फॉर्मर डिप्टी एडिटर ऑफ द हिंदू। ओके, दैट आई टोल्ड यू दैट द हिंदू न्यूज़पेपर which was founded in the year 1878 by the founder, everybody, G. Subramaniam Iyer, very good, G. Subramaniam Iyer। उस न्यूज़पेपर से यहां दो लोग एसोसिएटेड हैं, एक कल्पना शर्मा और दूसरा पी साईनाथ, ठीक है?
P. Sainath and Kalpana Sharma, they both associated with the Hindu newspaper. Okay. So P. Sainath and Kalpana Sharma, they both associated with the newspaper The Hindu. Very much important, right? So they can ask you in the match of the following questions or directly, right? Directly single type questions भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. So the Kalpana Sharma is a columnist and former deputy editor of The Hindu. In her four decades as a full-time journalist, she has also held senior positions in the हिम्मत वीकली, इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? ये इंडियन एक्सप्रेस में भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन्होंने काम किया है, और हिम्मत दैट इज ऑफ मैगजीन वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है. कल्पना शर्मा, सो मोस्ट बहुत ही जल्दी हम इन चारों के ऊपर हम कल्पना शर्मा के ऊपर वीडियोस और आपके परी जब पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के ऊपर आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस मिलने वाला है बहुत ही जल्द, सो दैट यू विल गेट इट. सो नेक्स्ट इट इज टू लर्न अबाउट द दैट वर्णिका वाज वेटिंग 𝗀𝗏𝗏𝗬, right? So this is what the 𝗀𝗏𝗏𝗬 was, an American born Indian sociologist and human rights activist, right? She was a prolific writer and published numerous books on the anti-caste movement and Dalit politics, women's struggles in India, right? उन्होंने दलित के ऊपर, ठीक है, वुमेन्स स्ट्रगल के ऊपर और साथ ही साथ एंटी कास्ट के ऊपर बहुत ही सारी बुक्स लिखी है. मेनी ऑफ द बुक्स she published on the anti-caste movement, Dalit politics and women struggles in India, and she is an American-born Indian sociologist, right? So each of the options should be clear, right? कहीं से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, so that you can answer it. चलिए आगे बढ़ते हैं. Copyright is considered as public property. भाई कॉपीराइट कब से पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, नॉन सब्सटैंशियल प्रॉपर्टी, एंड डी नॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एवरीबॉडी जल्दी से आंसर कीजिए. कॉपीराइट इज कंसिडर्ड एज, वेरी गुड, दैट द राइट आंसर. बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, राइट? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, राइट? कॉपीराइट इज कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. Copyright includes literary works, films, music, artist work, all the architectural design right related to the same inclusive of the rights of the performers, artist, producer or broadcast. So thus we can say that copyright is a form of intellectual property और साथ ही साथ industrial property. अगर यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर रहता, नॉन इंटेलेक्चुअल नहीं होता, इट इज इंटेलेक्चुअल, सो क्या आंसर होता जल्दी से बताएंगे एवरीबॉडी? What would be the answer then? Copyright is considered as both B and D, right? Industrial property भी है और साथ ही साथ आपका intellectual property भी है, right? It is very much important, right? Very good. Copyright is intellectual property as well as industrial property. Please note it down. Very much important. चलिए आगे बढ़ते हैं. 249 number question. It is very much important about the software or ICT. Adobe InDesign is used in. बिना ऑप्शंस का बताइए जल्दी से. ICT से रिलेटेड क्वेश्चन है और Adobe InDesign is used in radio documentaries, television drama production, blogs on internet, newspaper. Adobe InDesign सॉफ्टवेयर Adobe कंपनी का पेज लेआउट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है ये. और पेज लेआउट डिजाइनिंग जब हमने बोल दिया तो इट मींस कि डी जो है न्यूज़पेपर, दैट इज व्हाट द न्यूज़पेपर डिजाइनिंग इन द Adobe InDesign, राइट? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर. सो दिस इज व्हाट हियर that Adobe InDesign is the industry leading layout and page design software for the print and digital media. Okay, so InDesign, a desktop publishing software application for the creating flyers, brochures, magazines, newspaper and the books, right? It means that कि layout and designing software है ये Adobe InDesign, where we design the newspapers, flyers, brochures, newspapers, books, right? I hope everybody is clear with these questions, right?
Last questions here about 250. This question is for both of the paper 1 and the paper 2. दोनों क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है. समेटिव इवैल्यूएशन डील्स विथ, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस, दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशंस, जो दोनों पॉपुलर है. तो समेटिव इवैल्यूएशंस के बारे में यहां पे आपसे पूछा गया है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द पेपर 2. ये पेपर 1 से ही नहीं, पेपर 2 से भी ताल्लुक रखता है. जल्दी से बताएंगे. एबिलिटी असेसमेंट, प्रोसेस इवैल्यूएशन, सी इम्प्लीमेंटेशन, डी इम्पैक्ट. ध्यान से थोड़ा सोच कर, अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो टाइम भी ले सकते हैं, देयर इज नो टू वरी. थोड़ा सा ध्यान से सोचिए. एबिलिटी असेसमेंट जो है किसी स्टूडेंट की एबिलिटी को एसेस करना, क्या समेटिव एवैल्यूएशन से ही सिर्फ पता चलेगा? प्रोसेस की इवैल्यूएशन समेटिव एवैल्यूएशन करता है, इम्प्लीमेंटेशन हम समेटिव एवैल्यूएशन से करते हैं, या इम्पैक्ट? एवरीबॉडी, वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर कभी कभी आपको सवाल कंफ्यूज करती है, समटाइम्स क्वेश्चंस कंफ्यूज यू, रीड इट ट्वाइस थ्राइस, राइट? 2-3 बार आप पढ़िए, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर. दैट द राइट आंसर. मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड, बहुत लोगों ने कोशिश किया और सही आंसर भी है, बिल्कुल सही. इम्पैक्ट. Summative evaluation deals with the impact. The goal of summative evaluation is to evaluate student learning at the end of the instructional unit by comparing it against the some standard or the benchmark. कुछ आप एक बेंचमार्क बनाते हो, कुछ आप स्टैंडर्ड बनाते हो, उससे कंपैरिजन करते हो, और सबसे आखिरी द फाइनल रिजल्ट, एज द वर्णिका हियर सेड, दैट फाइनल रिजल्ट जो होता है आपका, वही आपका समेटिव इवैल्यूएशन होता है. पूरा सेमेस्टर्स, पूरा ईयर, एनुअल, ये सारी चीजें क्या है आपका समेटिव इवैल्यूएशन. द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पेपर, दैट इज व्हाट अबाउट द समेटिव इवैल्यूएशन. 10th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट ही इंपैक्ट करेगा आपका पूरा फ्यूचर, राइट? 10th का जो रिजल्ट है वो आपकी फ्यूचर को इंपैक्ट करेगा. 9th का रिजल्ट, 8th का रिजल्ट, राइट? 12th का रिजल्ट, the result of the 12th. This is what about the summative evaluations, right? So this is the impact, here it is. So remember it. Always remember about the summative evaluation, that is, it is an assessment evaluation comes at the end of the learning, while formative evaluations provides information and support during the learning, right? Important. During the learning अगर आपसे पूछा गया तो क्या होगा everybody? जल्दी से बताएंगे. इफ इट इज आस्क्ड ड्यूरिंग द लर्निंग एवेल्युएशन, इट इज देन आंसर वुड बी फॉर्मेटिव, राइट? वेरी गुड. फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. और अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो एंड ऑफ लर्निंग हो जाएगा आपका समेटिव, राइट? वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट, नेवर एवर फॉरगेट अबाउट द फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा. ड्यूरिंग द लर्निंग आपका होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और आखिरी का एंड ऑफ द लर्निंग, दैट इज व्हाट समेटिव इवैल्यूएशंस. ओके, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं जल्दी से. एवरीबॉडी, सीबीएफसी के द्वारा फिल्म बैन किया गया फर्स्ट, एवरीबॉडी, द फर्स्ट फिल्म बैन बाय द सीबीएफसी. कल हमें सिर्फ एक लोगों ने आंसर दिया था, मंजू ने आंसर दिया था, राइट? एंड 2 days एवरीबॉडी हैज आंसर, दैट इज व्हाट द, यस, नीला का शेड नीचे. सो ये आपको ध्यान में रखना है. अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो जल्दी से पूछिए. 250 क्वेश्चन दैट वी हैव कंप्लीटेड. 250 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं लगभग, ठीक है? यूट्यूब पे अवेलेबल है या मूवी या नहीं पता नहीं मुझे. अगर अवेलेबल है तो जल्द शेयर कीजिएगा मेरे साथ लिंक. डेफिनेटली शेयर द लिंक विद अस, डेफिनेटली विल. इज देयर एनी कंफ्यूजन इन एनी ऑफ द क्वेश्चन? देन प्लीज आस्क. किसी भी और किसी को भी डाउट है तो जल्दी से पूछिए.